Good morning, all of you. A very warm welcome to each and everyone. I welcome you once back to the science class. Okay, before starting or going ahead with this, again, I would like to say that please take all the necessary precautions so that you be on a safer side from COVID 19. Okay, starting with this, let me little bit brief you what we have done in the last class. Thereby, we will be starting ahead with today's class. So in the last class, if you remember, we discussed about the skull, the different types of body parts, the bones which are present, skeletal system, hand, legs, limbs and everything. Skull, the head region, the lower jaw and the upper jaw and everything. Okay. So today we are going to basically start with the joints. Okay. And thereafter we will be moving ahead. Okay. So if you can see here, let me share the screen first and then let us start. Okay, so this is the joints which we are able to understand. Okay, so joints basically means what? Okay, if I make you understand here, so joints का मतलब क्या होता है? जोड़. ठीक है, जैसे आप पतंग उड़ाते हो तो आप क्या करते हो? नायलॉन को मंजे से क्या करते हो? जोड़ते हो. ओके, टाई करते हो विद द हेल्प ऑफ अ नॉट. ओके, उसी तरीके से ठीक है, मतलब आप कहीं पे भी देखोगे, ठीक है, जैसे ये आपके फिंगर्स हैं, ठीक है, दिस इज योर हैंड, तो ये क्या है? ठीक है, दिस इज अ जॉइंट. ठीक है, यहाँ पे क्या है? जॉइंट है. और जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं, ठीक है, वहीं पे मोस्टली मूवमेंट्स पॉसिबल हैं. अगर जॉइंट्स नहीं होते तो मूवमेंट नहीं हो पाती. जैसे ये पूरा रीजन क्या है हमारा? स्ट्रेट है. ठीक है, कोई जॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो आप इसको मूव कर पा रहे हो? ठीक है, नहीं कर पा रहे हो, ये खाली स्ट्रेट है. ठीक है, आप इसको घुमा सकते हो आगे पीछे. ठीक है, बस. So in the same way, basically joints they help us in the movement, and these are those regions where either two bones they come and meet together. So let us see here. So our bones are hard and stiff, but we can still bend and move our body. This is possible because of the presence of joints between our bones. A joint is a place where two or more bones are joined with each other. ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आकर के आपस में जुड़ते हैं. ओके, bones are held together at a joint by strong elastic fibers which are known as ligaments. Our skeleton has two types of joints: fixed joints and movable joints. The skull joints are fixed and do not allow any movement. The movable joints in our body are of four types: hinge, gliding, pivot, ball and socket joint. ठीक है, now see, let us see what are these joints and then we will be moving ahead. Okay, so see, basically what it is telling here is that basically जहाँ पे भी joints present होते हैं वहाँ पे कुछ elastic fibers होते हैं. ठीक है, which are known as your ligaments, and it is due to these elastic fibers, that is ligaments only, that we are able to move our body parts. ठीक है, हम बोन्स को नहीं मूव करते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा, हम बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं. ठीक है, ये रिस्ट है और दिस इज द हैंड एंड दिस इज आवर हैंड रीजन, दिस इज द रिस्ट रीजन. तो हम क्या कर रहे हैं? बोन्स को नहीं मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग आवर रिस्ट रीजन. और कहाँ से कर पा रहे हैं? ठीक है, यहाँ से कर पा रहे हैं जहाँ पे हमारा क्या है? जॉइंट्स प्रेजेंट है. ओके, टेक द एग्जांपल ऑफ द फिंगर ओनली, वी आर एबल टू मूव. व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द जॉइंट्स. ओके, now let us see what how these different joints are present. If you can see here, okay, ठीक है, आप देखिए ध्यान से, तो एक यहाँ पे जॉइंट हो गया. ठीक है, अब एक फिंगर्स में अगर आप देखें तो यू हैव 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स. ओके, तो देखिए पहले, ठीक है, आप ऐसे करके देख लीजिए तो आपकी एक पूरी फिंगर, ये पहला जॉइंट हो गया यहाँ पे. ओके, दिस जॉइंट. ठीक है, फिर आप यहाँ से पकड़ लीजिए तो क्या होगा? दूसरा जॉइंट. ठीक है, फिर आप यहाँ से पकड़ लीजिए तो दिस इज योर थर्ड जॉइंट. ठीक है, मतलब आप इतना भी मूव कर सकते हो. ठीक है, फिर आप यहाँ से भी हाफ ऑफ द फिंगर्स. ओके, एंड एट द सेम टाइम यू कैन मूव योर एंटायर फिंगर्स. तो जहाँ जहाँ जॉइंट्स है वहाँ वहाँ से क्या होता है? मूवमेंट पॉसिबल रहता है. आपने देखा भी होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, वो लोग ऐसे करते रहते हैं. ठीक है, ऐसे करते हो आप लोग, कई बार करते हैं. सो हाउ दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स विच आर प्रेजेंट. ओके, इफ यू मूव अहेड विद दिस, so okay, one more thing, these joints they are of two type, fixed and movable. एक joints हैं लेकिन वो move नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे joints हैं जिनको हम move कर सकते हैं. तो ये जितने भी अभी हमने देखा, ये सब क्या है? move करने वाले हैं. that is why we say it to be the joints which can move. but if we talk about those joints which cannot move, ठीक है, जैसे हमारा skull region, ठीक है, ये हमारा ऊपर का region जो रहता है,
ठीक है, पीछे का रीजन, ठीक है, आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, स्कल आल्सो कंटेन्स डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, तो ये भी कई सारे बोन से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या है ये मूव नहीं कर सकता। हम जब भी करते हैं तो पूरे सर को ही आगे पीछे या राइट एंड लेफ्ट हम मूव कर सकते हैं। वी आर नॉट एबल टू मूव वन पार्ट ऑफ द हेड और वन पोर्शन ऑफ द स्केल, नो, ठीक है, खाली लोअर जॉ ही मूव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ फिक्स्ड जॉइंट। रेस्ट we have the movable joints which are present inside our body. Okay, let us move ahead. Okay, so a stiff, the movable joints, there are 4 types: hinge joint, gliding, pivot and ball and socket joint. Let us see each one of them. A stiff but flexible substance called cartilage is present on the surface of the bones where they join with other bones. अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, दोनों आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट अ जॉइंट बाय स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फाइबर्स व्हिच आर नोन एज लिगामेंट्स, ठीक है, दो बोन्स को होल्ड करके कौन रखता है, लिगामेंट्स रहता है। एंड कार्टिलेज इज व्हाट, इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बोन्स वेयर दे जॉइन विद अदर बोन्स, ठीक है, एक ऐसे जगह पे जहाँ पे ये दोनों आपस में, दो बोन्स आपस में जहाँ जुड़े होते हैं, उनके ऊपर का जो सरफेस रहता है, देयर द कार्टिलेज इज प्रेजेंट। ओके, cartilage they prevent the bone from wearing out because of rubbing against each other, ठीक है। cartilages क्या काम करते हैं, ठीक है, ये bones को wearing out मतलब खराब होने से बचाते हैं, because of rubbing against मतलब उनको आपस में रब नहीं होने देते हैं। तो जब वो लोग आपस में रब नहीं होंगे तो वो खराब नहीं होंगे। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है आपका फ्रिक्शन का, ठीक है। आपके शूज एंड स्लीपर्स हैं, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये पेंसिल ले लो, ठीक है, आप पेंसिल से लिखते हो तो क्या होता है, लिखते लिखते क्या होता है, पेंसिल की जो लीड होती है वो ब्लंट हो जाती है एकदम से, एंड देन अगेन यू हैव टू शार्पन इट एंड देन यू विल बी एबल टू यूज इट। ओके, द सेम थिंग हैपन्स विथ योर सोल्स ऑफ द शूज एंड स्लीपर्स। आप जब पहनते हो तो उसको 6 महीने, साल भर, 1.5 साल तक आप पहनते हो, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू फाइंड, द सोल स्टार्ट्स गेटिंग वियरिंग अवे, ठीक है, सोल स्टार्ट्स गेटिंग becoming thinner and thinner and finally it gets damaged and you will have to purchase a new one. तो हो क्या रहा है इन सारे केसेस में, आप क्या देखते हो कि बेसिक आइडिया, द बेसिक आइडिया इज ओनली वन थिंग कि रबिंग के वजह से, ठीक है, पेंसिल पेपर पे लिख रहे हो तो रब हो रहा है उसकी लीड, ठीक है, the soles and the slippers they are rubbing with your ground. Okay, so that is why here also in this case the bones they are not able to rub against each other. If they would be able to rub against each other, वो भी धीरे धीरे क्या होते हैं, डैमेज होते जाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैग्नीफाई करके आपको दिखाया हुआ है हिंज जॉइंट के कुछ एग्जांपल्स। ओके, सी the knee joint which is there, okay, the joints in our elbows, knees, fingers and toes are the hinge of a door. They allow movement in only one direction. Okay, अब देखिए, ठीक है, नीज का एग्जांपल ले लें, एल्बो का हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था वो फूड ईट करने के लिए, ठीक है, आप सीधा हाथ रखिए, ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, खाली इस डायरेक्शन में हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। क्या आप इसको इस तरफ फोल्ड कर सकते हैं? नो, आपके हाथ टूट जाएंगे। ओके, दे विल बी गेटिंग फ्रैक्चर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम द एल्बो पॉइंट। तो ये खाली एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है, दैट इज वाई इट इज नोन एज योर हिंज जॉइंट, ठीक है, दरवाजा एक ही डायरेक्शन में आप खोल सकते हो, ठीक है। इन द सेम वे इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ योर लेग, आप अपने लेग्स को क्या करिए, फोल्ड करिए, आप क्या देखते हो, पीछे ही आप फोल्ड कर पाते हो लोअर लेग को, ठीक है, आगे नहीं फोल्ड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द एग्जांपल ऑफ अ हिंज जॉइंट इज देयर। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, वी हैव द पाइवोट जॉइंट। द स्कल जॉइंट्स, the skull joins the backbone at a pivot joint. This joint helps us to move our head sideways, upward and downward. It also present between the bones of the forearm. Okay, now if we see here, so what we are able to see is that the skull joins the backbone at a pivot joint. जो हमारा neck region है वो कहाँ पे joint हो रहा है, आपका बैकबोन में जाकर के ज्वाइंट हो रहा है। और ये जैसे मैंने अभी आपको नेक का बताया, आप मूव करके देखिए, ठीक है, आप कहाँ मूव कर पाते हो, ठीक है, ऊपर, दैट इज अपवर्ड, एंड योर साइडवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, ये हम लोग जो नेक की एक्सरसाइज भी करते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, यही चीज है। ओके, सो बेसिकली in the case of pivot joint we are able to move sideways, upwards and downwards, तीन चीजें हो जाती हैं, ठीक है। और if we talk about the forearm, so the forearm comprises of the lower half of the arm. It extends from the elbow to the hand
and it is made up of the two bones which are known as ulna and radius. Okay, these two long bones form a rotational joint along forearm to turn so that the palm of the hand faces up or down. ओके ठीक है. अब देखिए फोर आर्म की जब हम बात करते हैं तो फोर आर्म क्या है, बेसिकली वही आर्म है जो मूव करके हमें फूड खाने में मदद करता है. ठीक है, बेसिकली दिस part of your hand is known as the forearm. Okay, which is able to move either upward or downward so that your palms start facing upward or downward. Okay, moving ahead with this. Okay, pivot joint, I hope just now I showed you, that is upward, then same thing downward, then left sideways, that is right sideways. Okay, so this is what the pivot joint is there. That is, in the case of hinge joint, direction was there only in one direction, movement was there only in one direction. But here in the case of your pivot joint, three directions: sideways, upward, as well as downward. Is that clear? Moving ahead, if we see here, okay, gliding joint. Gliding का basically मतलब रहता है sliding, जैसे आप slide करते हो surface पे. In the same way, gliding also, the ankle joints which are present, okay, and the vertebrae and the spine. ठीक है, इन दोनों के बीच में भी जो joints होते हैं वो gliding joints ही होते हैं. They make it possible for us to bend our back, twist and turn. Okay, back, bend and twist as well as turn. They also exist between the ribs and the breastbone. Okay, अब देखिए gliding joints के examples देखिए. जब हम देखते हैं, ये wrist है हमारा, ठीक है, हम इसको ले लेते हैं. ग्लाइड मतलब यहाँ पे क्या है, एक ऊपर का wrist और नीचे का hand का joint. ठीक है, they both are present one over the other and as a result of which ये क्या कर पा रहा है, ऊपर नीचे क्या कर, उसके ऊपर glide कर पा रहा है. ओके, सीधे. ओके, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, थोड़ा सा फॉरवर्ड ज़्यादा. ओके, देन एज वेल एज ट्विस्टिंग ऑल्सो. ओके, यू आर एबल टू ट्विस्ट इट. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द type of joint which is here, which is known as the gliding joint. Okay, in the case of ball and socket joint, in these joints the end of one bone is shaped like a ball, the end of the other bone is shaped like a cup or a socket. अब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि ये दोनों आपस में जा करके सेट हो जाएं. ठीक है, जैसे आपका आप देखते हो कि कोई भी आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर जैसे लॉक एंड की मेथड होता है, तो लॉक एंड की मेथड में आप क्या देखते हो कि एक लॉक रहता है जिसमें एक पर्टिकुलर की आप इंसर्ट करते हो एंड यू आर एबल टू ओपन दैट लॉक विद द हेल्प ऑफ दैट की. ठीक है, तो सेम वही चीज यहाँ पे भी होता है, बट लिटिल बिट इन अ डिफरेंट वे. कैसे होगा, यहाँ पे क्या चीजें होंगी, ठीक है, कि यू आर एबल टू एक ही स्ट्रक्चर है और एक ही आपका बॉल है. ठीक है, ये जाकर के इसमें रह जाएगा. तो सिंस बॉल इज एबल टू मूव इन ऑल द डायरेक्शंस. ओके, आप देखते हो ना कि ये है, ये दिस इज द सॉकेट एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर बॉल. ओके, सो द बॉल इज एबल टू fix very nicely in this socket and as a result of which movement is possible in all the directions. Okay, if you can see here, the ball end neatly fits into the socket. Ball and socket allows movement in all the direction. Example, shoulder joint and the hip joint. Okay, shoulder joint का example मैं आपको दिखा सकता हूँ. Okay, if you can see here, this is your shoulder. Okay, आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हो, नीचे भी ले जा सकते हो, sideways में भी ले जा सकते हो, इधर भी ले आ सकते हो, and you can move in all the directions. Okay, try to move it, you will be able to do this. Okay, moving ahead with this to, okay, cartilage. If you can see here, two bones are there which are joined together and this cartilage is present over the between these two bones so that they do not rub against each other. ठीक है, एक दूसरे से न contact में आए, otherwise they will keep on deteriorating their quality. Okay, cartilage are also present in other body parts such as external ear and nose where they help in giving a definite shape. Cartilage, ठीक है, कुछ other parts of the body में भी present होते हैं जैसे आपके nose as well as your ear where they help in providing a definite shape to it. Okay, moving ahead with the next topic, that is your muscles here. Okay, now if we talk about the muscles here, so muscles are fleshy bundles of thin elastic material that helps bones and joints to move. Muscles are attached to the bones with the help of strong fibers which are known as tendons. अब ठीक है,
यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है ये देखिए। क्वेश्चंस ये बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी होता है या कंफ्यूजिंग होता है, बट ये क्वेश्चंस मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि दे विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, दैट इज लिगामेंट्स, कार्टिलेज एंड टेंडन। ठीक है, ये आपको बस याद करना है अच्छे से। लिगामेंट इज फॉर बोन टू बोन, जब भी दो बोन्स को ज्वाइन करना रहता है तो हम क्या यूज करते हैं, लिगामेंट्स यूज करते हैं। ओके, बट व्हेन वी हैव टू जॉइन द टू मसल्स, ठीक है, दो मसल्स को जब ज्वाइन करना रहता है, सो वी यूज द टेंडन। ओके, नाउ लेट अस सी हियर। Okay, so these muscles, they are attached to the bones with the help of strong fibers which are known as tendons. ठीक है, ligament is, if you can see here, okay, this one is ligaments. Okay, bones are held together at joints by strong elastic fibers, ligaments, and bone to muscle. ठीक है, जब एक bone दूसरे muscle के साथ contact में आता है तो that is your tendon. Okay, now let us see this part, that is how many types of muscles are there. Okay, ये bicep and triceps I'll be explaining you just now. Okay, moving ahead to the types of muscles, so we have two types of muscles, voluntary muscles and involuntary muscles. Okay, now see, voluntary and involuntary का मतलब समझ लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम लोग इनके types पढ़ेंगे. Okay, voluntary का basic meaning होता है which is under our control. ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में है, whereas involuntary means which is not under our control. ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है. मतलब क्या है, समझने का कोशिश ये करिए, जैसे देर आर सम प्रोसेस इन आवर बॉडी विच वी कैन रेगुलेट. जैसे मूवमेंट है, ये हाथ हमें मतलब मूव करना है, तो ये मेरे कंट्रोल में है. ठीक है, तो दिस इज योर वॉलेंट्री मसल्स. ठीक है, ये ठीक है. बट इफ यू टॉक अबाउट द सर्कुलेशन, द डाइजेशन, द रेस्पिरेशन, ठीक है, देयर ऑल्सो मसल्स आर इन्वॉल्व, बट देयर वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट. अगर हम ये कहें कि हम खाना अंदर खा लें, ठीक है, वो डाइजेस्ट हो जाए और फिर हम उसको रोक दें कि वो दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ना जा सके, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. ओके, सो दिस इज इनवॉलेंट्री एक्शन, दिस इज इनवॉलेंट्री एक्शंस. ओके, हमारा सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, सांस लेना आप रोक सकते हो, आपके कंट्रोल में है? नहीं है. ओके, आप थोड़ी देर के लिए रोक पाओगे, अगेन यू विल हैव टू टेक इट. ओके, जो हार्ट है कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस. ठीक है, तो ये क्या है, कुछ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं. अब मसल्स में समझिए इसको. ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं और इनवॉलेंट्री वही चीज़ें हैं. ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स वॉलेंट्री एक्शंस में मदद करेंगी, इनवॉलेंट्री मसल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस में मदद करेंगी. आइए देखते हैं. Okay, some muscles move when we want them to move. We can control their movement. These are called as voluntary muscles. अभी मैंने आपको बताया, the muscles of our arms and legs are examples of voluntary muscles. Some muscles cannot be controlled by us in our body. These are known as involuntary muscles. Digestive system, eye blink are examples of involuntary muscles. Cardiac muscle is a special type of muscle present in the heart. It works all the time and never gets tired. Okay, voluntary, involuntary, cardiac. Okay, now if we move ahead, okay, yes one, how these muscles work. Okay, muscles usually work in pairs by contracting and relaxing. When we lift an object and bring it towards our shoulders, the muscles at the front of the arm, that is bicep, contract, while the muscles at the back of the arm, triceps, relax. When we bring back the object to its original position, the biceps relax and the triceps contract. ठीक है, अब इसको आप समझिए बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल से. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. ओके, पहले समझ लीजिए कि कहाँ होता है बाइसेप्स. जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस इज नोन एज योर बाइसेप्स. द लोअर पोर्शन इज नोन एज योर ट्राइसेप्स. ओके, सो व्हेन यू आर होल्डिंग एनीथिंग, जब आप कोई भी चीज उठा रहे हो, ओके, अपने तरफ, सो इन दैट केस योर बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट. जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, मसल्स एक जगह पे ज्यादा हो जाएंगी, और उस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये बाइसेप्स आपका फुल जाता है. वेयरएज ट्राइसेप्स क्या होते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि इधर से ये स्ट्रेच हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इफ यू सी इन द केस ऑफ ट्राइसेप्स, ओके, जब आप उसी को बैक को आप नीचे रखते हो तो द बाइसेप्स रिलैक्स, वेयरएज ट्राइसेप्स दे कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब चलिए इसको समझने की कोशिश करिए विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. नाउ व्हाट इज द एक्टिविटी हियर. ओके, यू जस्ट हैव टू मेक योर हैंड स्ट्रेट. ओके, डू इट लाइक दिस. ओके, इन दिस वे. ओके,
and keep your fingers here, okay, in this way. I hope all of you are getting, okay, in this way. Now just fold your hand, keeping your finger here tightly, and try to do it slowly, okay. When you will be doing it, when you are bringing it forward, the other hand should be here and one should be on the top, okay. When you bring it closer, जैसे आप किसी भी चीज को उठा रहे हो, okay, so what you will find that your this region gets swollen up, okay. ये क्या है, आपके biceps हैं, ठीक है. तो जब आप यहाँ से आप इस तरफ रिलैक्स्ड है, ठीक है. When you are bringing it closer, धीरे धीरे जब आप पास ले आते हो तो क्या होता है, ये मसल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, ये फुल जाएगा. सो दिस बिकम्स योर बाइसेप्स. अब ये रीजन क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है. अब स्ट्रेच कैसे होता है ये भी आप समझ लीजिए, इस रीजन से पहचानिए, ठीक है. ये रीजन जो आपका होता है, जो एल्बो का रीजन है, ठीक है. दिस हियर द मसल्स आर व्हाट, स्ट्रेच है अभी, ठीक है. तो मतलब स्ट्रेच हुआ होगा तभी ये क्या है, स्ट्रेच है. आप इसको छोड़ के देखिए, ठीक है. इस केस में देखिए, ठीक है, आपके जो स्किन होंगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे फोल्ड हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है. सो इन दिस केस व्हाट यू विल फाइंड इज दैट आपको पीछे यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है. तो दिस इज योर बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ओके. दिस इज व्हाट अ बाइसेप एंड ट्राइसेप इज, ठीक है. जब आप इसको देखेंगे तो जब आप ऊपर कर रहे हो तो यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन नीचे से वो चीज़ गायब हो जाएगा, आपका जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए रहेंगे. लेकिन जब आप इसको छोड़ोगे तो आप क्या देखोगे, नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ऊपर रिलैक्स हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स एंड द वर्किंग ऑफ द मसल्स, ठीक है. मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं. अभी आप और हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे इस चीज़ को कि जब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं तो ये इधर से स्ट्रेच हो जा रहा है, ठीक है, जिसके वजह से ये गायब हो जाता है. बट व्हेन वी आर मेकिंग इट अगेन, रिलैक्सिंग इट, तो ये फिर से अब ये ऊपर वाला स्ट्रेच हो जाता है और नीचे रिलैक्स हो जाता है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस ऑफ दिस मसल्स मूवमेंट वर्क आउट, ओके. Moving ahead with this, okay, caring for our bones and muscles. हमेशा याद रखिएगा, for the bones we require calcium, ठीक है. Calcium is the main source by which our bones are being made, as well as phosphorus is also one of them. Since we are talking about calcium here, तो इसीलिए आपको मतलब you are being forced by your parents to have milk, a glass of milk, twice or thrice in a day, or at least in the nights before going to bed. Is that clear? So this is what you have to follow, because calcium is basically required for the development of your bones and to keep your bones strong and healthy. Let us see here what it is given here. We should always maintain good posture to avoid unnecessary stress to the bones and the joints. We should eat food rich in calcium and proteins to keep our bones and muscles healthy. अब यहाँ पे कुछ postures के बारे में बात किया है, ठीक है. Sunlight helps our body to make vitamin D, which is also beneficial for our bones. So we should expose ourselves body to sunlight regularly. Okay. Now see here what is the basic concept here is. Sunlight मैंने आपको पहले भी बताया था विटामिन डी का सोर्स होता है, ओके. सो अराउंड 9 o'clock, okay, or around 9:30. 9 o'clock is the best time for this. Okay, if we are going to have 15 minutes or 10 minutes or even 5 minutes also out in the sun, so we will be able to gain vitamin D in our body, okay. So this vitamin D is a rich source which not only keeps our bones strong, they also keep us healthy, and proteins as well, okay. Calcium I already told you, okay. One more thing was there which I was going to tell. Let me see that. Okay, we should eat tree. Okay, posture when you are talking about, okay. ये देखिए, ये posture बहुत ही जरूरी है, ठीक है. posture जरूरी क्यों है वो समझने की कोशिश करिए. Most of the times you find that, ठीक है, teachers also they keep on telling that sit straight, ठीक है. आप क्या करते हो, ऐसे करके पढ़ते रहते हैं, ठीक है, और you bend और you lean on the table, ठीक है, आप दीवार की तरफ ऐसे कर लेते हो, ठीक है, ऐसे कर लेते हो. तो this is not the correct posture. Okay, your backbone should be completely straight. ये आपका एकदम सीधा बैठना चाहिए, okay, so that you will be able to, our bones are not in a tension. Tension का मतलब ये है जैसे ये relaxed position है इसका, ठीक है.
जब आप हाथ नीचे रखते हो तो क्या होता है, ये ऐसे रहता है ना, रिलैक्स रहता है, ठीक है। अब आप कहिए आप इसको हमेशा ऐसे उठाए रहो तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो सम इफ यू कीप डूइंग दिस रेगुलरली, सो व्हाट विल हैपन, देयर विल स्टार्ट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हियर, ठीक है। हो सकता है ये हमेशा के लिए ऐसे हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए जब आप देखते हो कि जो बहुत ज़्यादा ऐसे करके करते हैं या फिर हमेशा ज़्यादा लीन रहते हैं, तो हमारा बैकबोन क्या रहता है, वो सीधा ना रह करके, ठीक है, कुछ ऐसे हो जाता है, ओके, इन दिस वे, ठीक है, कर्व ऐसे, इंस्टेड ऑफ बीइंग कम्प्लीटली स्ट्रेट इट कम्प्लीटली बिकम्स दिस वे, थोड़ा सा फोल्डेड हो जाता है, कर्व्ड हो जाएगा। एंड इसीलिए आप देखते हो कि वो लोग झुक जाते हैं जल्दी, ठीक है, उनकी क्योंकि पूरी की पूरी बैकबोन ही, स्पाइन ही क्या होती है, कर्व्ड हो जाती है, ओके। So that is why this posture is very much important, okay, how to sit, how to sleep, okay, all these postures should be followed very nicely so that you as well as your bones, they remain healthy, and at the same time they keep up to their postures, they keep up their shape and size for a longer period of time, okay. Moving ahead, this we have done, okay. Nervous system is there. I hope this is the last part. Okay, yes, nervous system is the last part. Nervous system, we don't have the time today, so we will be starting here. Name the parts of the skeleton that protect these organs. Okay, brain, tell me. Skull, spinal cord, rib cage, heart, rib cage only. Okay, and this lungs, rib cage only. Okay, basically rib cage is protecting your both heart as basically the lungs only, heart as well, and spinal cord is also prevented by your rib cage only, okay. If you can see here, see what we have studied here, okay. The skeleton protects the delicate organs such as brain, heart and lungs, okay. So this is by the skeleton, and which even this is by the rib cage only, and the ribs are attached to the spine at the back and to the breastbone in the front, okay. So this is only protecting us, okay. Moving ahead with this, okay, this is the most important part. The smallest bone in our body is present inside the ear, it is called as a stapes, it is only 2.8 meters. So the longest bone is the femur, okay, present in the thighs, and the smallest bone which is known as the stapes here, okay. So I hope this was all for today, okay. We don't have the time to start with the nervous system. As I told yesterday, today also I am telling you class, please have a thorough reading of this chapter so that you'll be able to understand in a much and better way whatever we have discussed today. Please do share your queries, whatever the questions are there, please do ask, so that you are able to have a much more better understanding. And see, this is the starting part of biology, ठीक है। अब ये बायोलॉजी आपकी शुरू हो गई है, ठीक है। दैट इज यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योर एंटायर बॉडी ओनली, ठीक है। आप अपनी बॉडी के बारे में ही पढ़ोगे, क्योंकि हमारी बॉडी में ही इतनी चीज़ें हैं कि हम उसी को पढ़ लें तो बहुत है, ओके। बिकॉज वी कीप ऑन रिसर्चिंग ऑन आवर बॉडीज अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड एवरीवन, ओके, ठीक है। बट हमारी बॉडी को ही पहले रिसर्च कर लेना बहुत ज़रूरी है कि जो जो हमारे अंदर हो रहा है मुझे पता है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं, okay. So these are the things which are very much required, and they are of very much importance as well, okay. So please, without forgetting, please just have a reading of it, the entire part which we have studied today, and please first read what you have what has been taught today, and then once again read from the entire beginning, ठीक है। सारे systems, skull, skeletal system, the lungs, rib cage, spines, spinal cord, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप पढ़ लीजिए, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर रहे। और जैसे जैसे आप पढ़ते चलोगे, सो यू विल बी एबल टू कोरिलेट अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। आप एक दूसरी चीज़ों को जोड़ते चलोगे, एंड यू विल बी एबल टू हैव अ मच मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, ओके। So till next class, please stay safe and stay healthy, take all the necessary precautions, okay. Don't go out, just wait for a few months more, okay. Already it has been out in the newspaper that from 21st of September your 9 to 12, okay, the schools as well as the students can come, no foundation, आ सकते हैं, but only 9 to 12, okay. So let's hope for us also that we will be able to rejoin again in the school, but till then stay safe and stay healthy and take all the necessary precautions. That's all for today. Thanks for being with me. Have a superb day ahead. Thank you.